Welcome everybody to our question answer discussion part in the poem KITE. समस्त को स्वागत करुच्ची काइट पोएम रो सेकेंड पार्ट को जोटा कि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आम एठारे करिवा. लेट मी एक्सप्लेन द पोएम द समरी ऑफ द पोएम इन शॉर्ट. वर्तमान पोएम रो समरी को बहुत शॉर्ट भाव में तुमको रिमाइंड कर दउची जाफल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ले तुमको यह बहुत साहाय्य करिवो. इन द पोएम काइट we have only two stanzas. Kite poem रे आम पाखरे दुईटी stanzas अछि. The first stanza says when the kite is on the ground it is just paper and string, but when it is in the air it dance and sing. Second stanza कौन कहछि? It expresses about the kite in the air. The second stanza expresses when the kite is in the air, it will dance, sings, and capers, but when back onto the ground, it will just a paper and string. So this is all about your poem. Now your question answer discussion. What is the poem about? It is your first question. You can see on your screen. What is the poem about? Poem ti kaha par adharito? The very simple. The poem is about the kite and its activities. Poem टी कहाँ पर ताले पर्यवेक्षित? The poem is about the kite and its activities. Poem टी गुड़ी एवं तार कार्यकलाप बाबद रे एथरे पर्यवेक्षित बा ता बाबद रे ठारे कहा जाइछ. So very simple. The second question. The poet speaks of two situations of a kite. What are they? से गुड़िक कौन? पोएट दुईटी सिचुएशन सेठी देइछन्ति गोटे काइट. व्हाट आर दे? से गुड़िक कौन? काइट ऑन द ग्राउंड एंड डैश. से डैश रे तुम बसेब तो जानिछो. फर्स्ट सिचुएशन होज काइट ऑन द ग्राउंड, देन सेकंड रे कोन होज काइट इन द एयर. तो सेकंड रे हम आंसर पाई गेले तुम डैश रे यूज करियो काइट इन द एयर. नाउ द थर्ड वन. इन व्हिच सिचुएशन इज द काइट मोर एक्टिव, इन द एयर और द ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड कौन सिचुएसन ले कौन परिस्थिति रे काइट तुमको अधिक एक्टिव लगी, एक्टिव माने सक्रिय तार एक्टिविटीज गुड़ा बढ़ी जाइए. वेरी सिंपल. व्हेन द काइट इज इन द एयर इट इज मोर एक्टिव. द काइट इज मोर एक्टिव इन द एयर. काइटी अधिक सक्रिय अच्छी जितेबाला यह वायु रे उड़ुछि. कारण जानी आम से कौन कर सिंग्स डांस एंड कैपर्स ऑल्सो एवं कैपर्स दहली एपटू सेपट को मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट डज इट डू व्हेन इट इज इन द एयर? यह वायु रे थिवा बेले आकाश रे थिवा बेले कौन करे? इट इज व्हेन इट इज इन द एयर. आम एमती आरंभ करवा आंसर टी. व्हेन इट इज इन द एयर जिते बेले यह एयर रे थाए, पवन रे थाए, इट सिंग्स, कैपर्स एंड डांसेस. कौन करे ताहले ना? ये सिंग्स करे, गीत गाए, डांस करे, नाचे एंड कैपर्स एपटू सेपट को दहले. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन. हाउ इज इट व्हेन ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड रे थिला बेले केमिति थाए? व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड इट इज जस्ट ए पेपर एंड स्ट्रिंग. व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड इट इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग. जिते बेले यह माटी रे थाए, ग्राउंड रे थाए, भूमि रे थाए, यह केवल गोटे गुड पेपर कागज एवं तुमर सूता भाया. फोर्थ क्वेश्चन. व्हेयर इज द काइट वेरी हैप्पी, इन द एयर ऑन द ग्राउंड? काइट केते बेले अधिक खुशी रे रुहे? ग्राउंड रे जेते बेले रहउछि ना एयर रे? ऑफ कोर्स एयर. सो वी कैन से द काइट इज वेरी हैप्पी इन द एयर. Now seventh question. Question number 7. How many stanzas are there in the poem? A poem ro ketoti stanza अछि? There are 2 stanzas in the poem. Question number 8. What does the first stanza talk about? The first stanza talks about the kite on the ground. First stanza कौन कहिछि ना kite on the ground. The situation of a kite on the ground. गोटे काइट सिचुएशन परिस्थिति कौन जो ग्राउंड रे रहे. व्हाट डज द सेकंड स्टांजा टॉक अबाउट? सेकंड स्टांजा कौन एक्सप्रेस कर? द सेकंड स्टांजा टॉक्स अबाउट द काइट इन द एयर.
काइट जो एयर रहे ता कौन करे ता बाबद कही और वी कैन से दैट इन द सेकेंड स्टांजा टॉक्स अबाउट द सिचुएशन ऑफ ए काइट इन द एयर 10 number what do the first two lines of the first stanza talks about kite on the ground or kite in the air what do the first two lines of the first stanza रे प्रथम दुई धाड़ी कौन कही kite on the ground ना kite in the air now of course kite on the ground बाबद रे कही first two stanza so the first two lines of the first stanza talks about the kite on the ground 11 number what do the first two lines on the second stanza talk about द्वितीय स्टांजा रे थिबा प्रथम दुई धाड़ी कौन कही द फर्स्ट टू लाइन्स ऑन द सेकेंड स्टांजा टॉक्स अबाउट काइट इन द एयर so this is the end of this part